Okay, so I've started the recording. Okay, hopefully we'll start the session as well. Okay, since all of you have zero questions, I will directly start with the agenda of session. First, we will discuss how to understand the question, continuing with the previous class. Okay, then we will go for basically how to write and introduction. Okay, how to write introduction of the questions. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes. Okay. So first, let's continue with the last class where I have left. The words that you don't understand, it's completely fine. Go with the logical reasoning that you can think of. Since you are into the preparation with me from last 30-45 days for the batch 1, even for the batch 2 students, those who have joined at the right time, they are into 15-20 days. So what I suggest, if there is a suppose constitutional morality, try to understand it with the perspective in terms of layman. What do you understand when it is constitutional? What do you understand when it is morality? And what do you understand when they come together? Okay, I have deliberately gone beyond the simple questions to this paper particularly just to let you know. Okay, and second thing, those who have turned off their camera, after the session, we will certainly have good words. Okay, words of wisdom. So at least through your camera, sometimes I'm able to judge whether you are able to understand or not. We are not in the physical class. I cannot see people. I cannot look at your body languages. So it's like, okay, चल रहा है, चलने दो, है ना? ऐसे ही करेंगे अपन लोग. So first question, मछली बजाना मत बजाना, पहले बता रहा हूँ, हैंड रेस कर लेना, और जो बार बार बोलेगा पहले I will try to complete those who haven't spoken, ठीक है? तो बुरा मत मानना. Considering all this, I'm starting the question. Sir, can you zoom it out a little bit? Sure. Thank Perfectly you, fine. अब मेरी Yes, स्क्रीन sir. से बाहर Now. चला जाएगा क्योंकि नहीं, now sir, perfect. ठीक है, चलो then. First question is there. Who would like to go first? Okay, Divyanshi. So, should I? Yeah, go ahead. अपने हैंड रेस नीचे मत करना, बाकी लोग मैं लाइन वाइज पूछता रहूंगा. करण, तेरा नाम अभी आया था, बाकी को बता रहा हूं मैं. ठीक है, फाइन, गो अहेड. Constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. ठीक है. So my first question, what are the keywords involved? I will not ask you where to stop. I've left one first step. I'm jumping on directly on the second. What are the keywords involved over here? So, मुझे बताना है ना? हाँ, obviously. हाँ. So constitutional morality. Okay. Then rooted. Maybe. Constitution itself. Okay. Founded. Okay. Essential facets. Okay. Then explain the directive. Okay. And this constitutional morality doctrine. Okay. Then last, judicial decisions. Okay. Fine. So one feedback over here. Is MR type means अगर आप देखोगे आपके उनके वर्ड्स के अलावा जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हमारे, उसके अलावा आपने सबको बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है. रेलेवेंट को छोड़ दो बस, बाकी सब कुछ लगभग आ गया है यहाँ पे. So this is not right way for the time being, I will say. Okay. Okay, sir. इतना गलत भी नहीं है. Yes, Question is like that only. Okay, तो बिल्कुल मोरल डाउन मत कर लेना. Yes, Brijesh. Yes. Yes, sir.
अब मेरे को सिर्फ कीवर्ड्स बता, इसमें से क्या क्या हटाना है। हटाने सर। हाँ। सर इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ को हटा सकते हैं सर। ठीक है। हम फाउंडेड को भी हटा सकते हैं सर। ठीक है। एंड यस सर, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है सर, वो पहले आ ही चुका है कीवर्ड में। ठीक है, सब कुछ यस। हटा दिया तुमने, इतना गुस्सा नहीं करना था, कोई बात नहीं, कुछ बच गया है इसमें। फाइन, करण। सर रूटेड को हटा सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ठीक है सब। ठीक है, सो मेघा। So, doctrine of constitutional morality and relevant judicial decision is the keyword. गुड, फाइन, सो यस इट इज। नाउ स्टार्टिंग हटा रहा हूँ, एक्सप्लेन रहने देता हूँ मैं। सो इफ यू लुक एट योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ना, इट इज जस्ट सेटिंग अप द कंटेक्स्ट। ओके, व्हाई इट इज सेटिंग अप द कंटेक्स्ट, यू विल लुक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोई चीज है, इज रूटेड, वो कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप है। और फाउंडिंग के फाउंडेड कहाँ है, विद ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स। एसेंशियल मींस ये नहीं हटाना था बस। If you remember basic structure doctrine, I have one lawyer, I have Megha, I have one lesser graduate, so I can expect this from you guys at least. At least I am telling you. Basic structure doctrine. Okay. Essential facets सीधे वही बताता, basic structure doctrine means if the basics are there which cannot be eroded out from our constitution. You cannot say कि कल से भारत secular नहीं है. You cannot say that India will not be a democratic nation. You cannot say that we the people of India, or you cannot say Article 1 says about the union of states, हटा देते हैं इसको। फेडरलिज्म को आप हटा के ये नहीं कह सकते कल से हम प्रेसिडेंट टाइप का इलेक्शन लाएंगे। We cannot say कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसको सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को दिया जाएगा 1000 रुपए किलो के हिसाब से। Means it is not for the selective people over there. ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी की पूरी apart from essential facets, because that we will use in our answer. Second part of the question was the real question. ठीक है, am I clear over here? अब्दुल कोई डाउट है क्या? सर रूटेड जब शब्द लिखा हुआ है तो वो ऐसा नहीं बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिसपे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या प्रीएम्बल। बेसिक स्ट्रक्चर तो बहुत बाद में इवॉल्व हुआ ना। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने एक एग्जांपल दिया है। एक तो यार बिल्कुल जहां तुम बैठे हो ना, लाइट तुम्हारी अपोजिट है, तो मुझे सिर्फ मतलब आपकी शैडो दिख रही है। ठीक है, तो लाइट, हाँ एक चीज, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, अब्दुल ये क्या कह रहा है, इट्स नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में रूटेड है, और इट माइट बी केस ना कि कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी चीज में रूटेड है। The things that you are talking about, it is प्रीएम्बल और constitutionalism. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रीएम्बल जब बनने से Not पहले only हमने preamble of objective resolution, and number of things are there. Constitution rooted है different constitutions में, different precedents में, Government of India Acts में, एक उससे सबसे बड़ा constitutionalism में। तो if means constitution किसी में rooted है, तो it also means constitutional morality भी उसमें rooted है। It's a superset एक तरह से, ठीक है। तो I'm not saying that you are saying wrong. What I am saying, essential facets. Nowhere you can define what is essential or not without coming up with the basic structure doctrine. What is essential? If you are not coming with the basic structure doctrine, you cannot define what is essential. Every day we do amendments. Do amendment with the basic structure. Supreme Court will say clash, nullified. That's what I was talking about. I hope the concept is clear. यस सर। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में नहीं है या ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल्स में, प्रीएम्बल्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रीएम्बल से नहीं है, या जीओआई 1935 एक्ट से नहीं है। वो सब भी है, वो और नीचे का बेस है। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर दैट। So this was our question. I hope the understanding of the question is clear. In such question, the first line just set the context. ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी with relevant judicial decisions
डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कौन लेके आएगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैक्सिमम काम सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा। हाई कोर्ट करता भी है तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं रेमेडी के लिए। सुप्रीम कोर्ट करता है तो कुछ नहीं, फिर तो लॉ लाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली का ऑर्डिनेंस बिल फिर हम लाए हैं, ठीक है। इट माइट बी केस कि दोबारा कोर्ट में जाएं अभी केजरीवाल साहब हमारे। तो एक्सप्लेन डायरेक्टिव है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आई होप कीवर्ड्स क्लियर, रेलेवेंट। अब इसमें दिखाना ये है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, इट इज एक्चुअली रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। It is not like that it's only about the judicial pronouncements. Rather than the basic structure doctrine directly covers, protects the doctrine of constitutional morality. Okay, means अब basic structure doctrine में रखो basic essential facets. But why I am saying basic structure doctrine? अभी मैं आपसे लोगों से पूछ लूंगा ना essential क्या है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत जो भी अपने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है वो सब एसेंशियल है। क्वेश्चन क्लियर आई गेस। नाउ एज यू नो दैट इन दिस क्लास आई विल फोकस मेनली ऑन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। व्हेनेवर वी मेक इंट्रोडक्शन वी हैव टू एंश्योर दैट इंट्रोडक्शन इज contextual. First thing, okay, what type of introduction? I will say first, okay, contextual. For example, this line I said, explain the context or put forward the context of the question itself. Second, recent happenings. Sometimes it might be case that certain things has happened and due to that this question has been asked. You can come up with the same in your introduction itself. Third, facts. When I say facts, it might be any kind of fact. Maybe in this case, any Supreme Court judgment, any particular article, maybe some report mentioned fact. For example, if I'm talking about the poverty and I say recently UN report on poverty has mentioned that India had brought out 450 million people out of poverty in last 25 years. It can be one of the introduction for that poverty question. Okay, so these three types of introductions are there, and one is the last, because everyone can write about it. That is definition. Okay, so 4 types of introduction we will talk about in the upcoming questions. So I will come up with a question as well as your introduction simultaneously. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ लिया उसके बाद 3 क्वेश्चन समझ लिए फिर हम एक साथ बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन की, बट वी विल गो साइमल्टेनियसली। आई होप ये सब नोट कर लिया है बिकॉज आई एम रेजिंग इट। नाउ व्हाट शुड बी द एप्ट इंट्रोडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करना या उसका कॉन्टेक्स्ट देना। पहले ये स्टेटमेंट तो समझ में आ गई, कॉन्टेक्स्ट लेना मुझे समझ में नहीं आया, वो एक्सप्लेन करो कि है क्या। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो कहाँ से उसका एक ओरिजिन है, या थोड़ा सा 20-30 वर्ड में बैकग्राउंड देना, ऐसा कुछ। ठीक है, फाइन। एनीवन एल्स? बाकी लोग मतलब कुछ नहीं। हाँ विजेश बोल। सर हम इससे इंडिया पास्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का थोड़ा सा बता के। जैसे कि इंडिया को पहले ब्रिटिशर्स ने वो किया, क्या कहते हैं, उनको पीड़ित किया, यानी एक्सप्लॉइट किया, तो इंडियंस ने उसको चेंज करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें लेके आए, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23।
बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन को सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए देने के लिए। गोपाल, सर किसी जजमेंट के बारे में वेरी mention लो करना वॉइस, जिसमें आई एम अनेबल टू हियर एनीथिंग। सर आप आ रही है आवाज? बेटर बेटर। सर किसी जजमेंट के बारे में मेंशन करना जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात करी हो सुप्रीम कोर्ट ने। गुड इनफ, गुड इनफ। That's what I said when I said contemporary times, na? Recent happenings. Contemporary times. Good. Divyanshi. सर सेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की मतलब क्यों जरूरत है कि गुड गवर्नेंस। Thank you. Fine. Discussion ends over here. Really. Okay. So what I said, context. Sir, who is it? इंट्रोडक्शन बोलो। है कौन? अब्दुल। यार हैंड रेस करके बोला करो और बीच में मत टोका करो प्लीज जब मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? हैंड रेस कर लिया करो बस, आई विल आस्क, डोंट डू वरी, ठीक है? कंटेक्स्ट का क्या है? व्हेन आई सेड व्हाई, कंटेक्स्ट आंसर्स द व्हाई। व्हेन शी सेड कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जरूरी क्यों है, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जरूरी क्यों है, शी इज एक्चुअली आंसरिंग व्हाई। But in this question, this introduction will be more apt than any other. Reason for the same, if you look, explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. आपने अगर why answer किया, then you are going to answer through your judicial interpretations, judicial decisions or judicial precedents कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या। तो इट इज सेटिंग अ फ्लो, यू आर आंसरिंग जरूरी क्यों है एंड एक्सप्लेनिंग यू द सेम थ्रू जजमेंट्स। इन द एंड वी विल टॉक अबाउट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ नया नहीं है, ये जो जज वगैरह हमारे देने सिर्फ यही नहीं है यार, ये चीजें तो ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, whenever you see a TV debate, it says if we erode Article 25 to 29, don't you think we are a still secular country? People say yes. Bring out Article 14, bring out 16, bring out 17, and other things. We can interpret even secularism for these articles, from these articles only. 25 to 29 are just helping us. So basically, this is the way we tackle the question. ठीक है अब्दुल, इसके अलावा कुछ बोलना है तो बताओ, वरना आई विल मूव नेक्स्ट। सर डेफिनेट मतलब इंट्रो लिखा मैंने, वही अगर बोलो बोलो बोलो। Constitutional morality means adhering to the principles on which the Constitution was found, principles or spirit of the Constitution. Recently, in the Prashant Bhushan case, Supreme Court talked about the constitutional morality, freedom of speech, bracket में. Fine. So why I said that why Divyanshi's type of introduction is more better. You came up with one example within the introduction itself. Now just look at your structure. If you say this, then again in the body you have to do all the examples only. Okay. The coherency is missing. If you answer why it is important, keep on writing a number of examples. Who cares? Flow. I was talking about the flow. So that's how we judge even the introduction. कैसा हम लिख रहे हैं कि आंसर किस लाइन में लेके जाएगा. Always remember, writing a good introduction do not fetch you good marks. Writing a bad introduction will certainly ensure you get less marks. Okay, so I will go on the question number 2. Discuss the desirability of greater representation to women. अरे मैं क्यों कर रहा हूँ यार, sorry. So who shall read first? अरे रुक जाओ तुम लोग, 4-5 लोग हो, मेरे को देखना तो जरा बाकी लोग शो कौन कौन है. शर्वीर, यस कृति. Yes, sir. पढ़िए. Discuss the desirability of greater representation to women in higher judiciary
to ensure diversity, equity, and inclusiveness. Keywords are discuss, representation to women, judiciary, diversity, equity, and inclusiveness. Higher judiciary, not judiciary. Yeah, higher judiciary. Okay. Almost every keyword is there. Now, before I go into the, I will ask Kriti you only. Second is one word we haven't underlined or we haven't, I will say, focused. That is desirability. Desirability. I will use this or related word in the conclusion that I will talk in the end. So Kriti, tell me what should be your introduction. My introduction should be related to some cases, most probably related to women, like that case. MTP related cases, medical termination of pregnancy related cases, जहाँ पर हम लोग because of lack of women in higher judiciary, the laws or the interpretations are somewhat biased towards men, because they are giving less right to women on their bodies. काफी क्रांतिकारी केस था वो, बट इंट्रोडक्शन के लिए फिट नहीं. Okay. Reason I will tell you why, it should be made clear. We are about to discuss. If you are mentioning these things, then in the introduction, what will you write in the body? Whatever you have mentioned, it should be in the body first. So I will just address the fact that there is less number of women at the position of judges in Supreme Court, and we know that almost there is 50% of population of women and men. So why there is disparity there? Question introduction में Like- question थोड़ी पूछना है यार. Why there is disparity? अच्छा खासा introduction So बनाते there बनाते is question. disparity there. There is a disparity there. Yeah. So, but always remember, as we are talking about the introduction, thanks for the putting. I will not ask other people because this is the apt introduction, and don't go beyond it. Don't go around it. A reason for the same, if you mention the numbers, this is the thing that you will have to answer. But the way she has said disparity and all, recent Supreme Court data suggest out of 32 judges, only 3 are female. Which is, अब यहाँ पे disparity की जगह which needs to be improved. ठीक है, इतना करके छोड़ दो. Don't criticize anything in the introduction itself. अगर मैं तुम कहूँ तुम्हारा इंट्रोडक्शन बेकार है, बुरा लगेगा. मैं कहूँगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो सुधर सकता है ऐसे, तो तुम्हें लगेगा हाँ इंसान सुधार रहा है, ये सही बातें कर रहा है. इनडायरेक्टली मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि बुरा है. ठीक है, बट वी हैव टू से इन पोलाइट मैनर. Okay. ठीक है, नीड्स टू बी इम्प्रूव. और ये मेंशन कर दिया which brings out more opportunities, which brings out the fact that more opportunities should be given to women. खत्म. एक लाइन इनकी, दो लाइन का इंट्रोडक्शन खत्म. Introduction, though Ishita Kishore has got good marks, I will say, but her handwriting is large as well. I'll request all of you, do not try to make introduction more than 3 lines. At max 4 lines. Limit it to 3-4 lines. Short and crisp introduction. This is done and dusted. Okay, so I will not ask about the body, but the word desirability.
how you can use or what it triggers in your mind for the conclusion side. मेरे को एक बार देखने दो सो कौन कौन रहा है. शौरवीर. Yes, sir. हाँ बताओ जरा. Sir, desirability. So why is it important again? उसकी importance क्या है? I'm asking for the conclusion यार. सो रहा था क्या सच में? नहीं sir, हाँ. सो नहीं रहा था. Conclusion. So how many of you have ever applied for private job? There are two types of qualification. Desirable. Second one is essential. Graduate is essential. Preference will be given to work experience will be 2 years. Candidate with work experience of 2 years. So that is desirable. Means desirable and essential goes hand in hand. So in conclusion itself, I will use this word. मतलब जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में आ गया. It's high time, not only in the judiciary but also in the parliament, there should be reservation 108 constitutional amendment bill should be reintroduced. हो गया. Conclusion perfect. I'm linking judiciary as well as parliament. कि दोनों ही बेवकूफ हो. तुम लोग कुछ मतलब ऐसा रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं चाहिए कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए. बस बड़ी बड़ी बातें. So whenever there is a question, sometimes question hints you. The question is giving you high potential. There should be some low potential as well. What you can configure it out depends on you. So that was not a keyword, but certainly a word which forced me to think for a conclusion. I hope now I am clear. Okay. Okay, so this one is a good question actually. Sir, sorry. बोलो. So, sir, 108 amendment का क्या लिंक था? मुझे समझ नहीं है. अरे 108 थी था, मैंने गलत बोल दिया. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट बिल है वो. हाँ, अमेंडमेंट बिल सर. यहाँ पर बोलते हैं 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट को देना चाहिए, पर ये तो जुडिशरी का क्वेश्चन है ना. वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. आई एम इंक्लूडिंग बोथ. व्हाट आई हैव सेड इन कंक्लूजन. पहले अब आप मुझे ये बताओ कि ये भी होना चाहिए, जुडिशरी में भी हायर रिप्रेजेंटेशन. मैंने क्या बोला है कंक्लूजन, वो बताओ. 108 अमेंडमेंट बिल भी इंक्लूड नहीं बोला मैंने ये तो बोला, ये तो एक वर्ड था. मैंने कंक्लूजन स्टार्ट कैसे किया था? आइडिया नहीं आ रहा है सर. वही समझ नहीं आया पार्ट. नाइस अटेंशन. सर पार्ट नहीं समझे इसीलिए पूछ रहा हूँ. कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार. इतना सीरियस में तो ऐसा कर रहा है 2 मिनट में जाएगा तो साइड करेगा. ऐसे नहीं करना कुछ. ठीक है. बेसिकली क्या है कंक्लूजन, जब क्लास लूंगा आगे कंक्लूजन की, जैसे अभी इंट्रोडक्शन क्लियर कर रहा हूँ तो बता दूंगा फ्यूचरिस्टिक होता है. तो अभी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है. जब आपको जुडिशरी में भी रिप्रेजेंटेशन कम लग रहा है, पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन कम कर रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ इट्स हाई टाइम, नॉट ओनली इन जुडिशरी बट ऑल्सो इन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ. फ्यूचर आया समझ में? नहीं आया? ओके सर. ठीक है. बेसिकली फ्यूचरिस्टिक होता है हमारे कंक्लूजन, तो उसके सेंस में है. डोंट यू वरी. जब कंक्लूजन की क्लास लूंगा इसके बाद, फिर उसके बाद एक बॉडी की क्लास लूंगा, उसके बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा. डोंट यू वरी. ओके, सो हु एल्स इज mum for the time being? Ayushi, I guess haven't spoken so far. Yes, sir. Try for question number 4. No, 4th here. Third. No, third. Sorry, third. Yes, sir. How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their fiscal position? So the keywords will be how and recommendations
Finance Commission, and probably we'll talk little about fiscal position also and improvement. And Improve. क्या क्या हटाना है इसमें से? Who will try for it? लोगों, let me name some random people, those who haven't spoken so far. Lanchi, are you there? No. Srinija? I think how, sir? How? I have to remove it? Yeah. Okay. As you say. Recommendation is one keyword. Then 14th Finance Commission. I think only how I would take off, sir. All the Okay. 4 are essential. Okay, fine. Who else is there? Vandana? सर हाउ रिमूव कर दिया, पर मुझे लगता है हाउ तो होना चाहिए, तभी बताएंगे ना कि कैसे इम्प्रूव किया। ठीक है, आगे बोलो। और रिकमेंडेशन भी आई थिंक सही है मेरे हिसाब से कुछ। सही किरण? Sir, how and 14th Finance Commission and fiscal position, and we can also include, I think, states. Good. The question is talking about the states, and you guys have ignored the same. Good enough. Fine. So Megha, now tell me about something about introduction. So there is one line written in Lakshmikant that Constitution envisages a Finance Commission as the balancing wheel of the fiscal federalism in India. Good enough. Short and crisp introduction that I was talking about. Okay. Lanchi, are you there even? No. Lanchi. Fine. Anyone else who haven't spoken so far? Kavya. Abhishek bhi bacha. After this, Kavya. Yes, sir, same. The Constitution articles and provision with respect to Finance Commission and its role in improving the fiscal position. What you will write in introduction? Don't tell me body. The origins, Constitution provision, that is article. Okay, okay, fine, fine, good enough. That was what was missing. Now it is fine. So, okay, Abhishek, next question to you. Sir, to what extent, in your view, the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? So, to what extent, pehla keyword, parliament. Second, ensuring accountability and executive. Okay. Introduction में क्या उठेगा? 72. Sir, introduction में sir, sir article, sir accountability का importance भी बता सकते हैं sir कि why accountability is important, और sir SOP वगैरह, मतलब शायद separation of powers वगैरह. Why accountability is important is something that you are on right track. बाकी उसके बाद why accountability is important? Answer this. Sir, accountability sir, मतलब good governance के लिए important है. अब्दुल unmute हो यार, mute कर लो यार तुम सब आप बीच. Thank you. Sir, good governance के लिए important है sir. Don't try to bring citizen centric administration के लिए. So a learning for all of you, don't try to bring any new word if it is not directly related to the question.
For example, it is asking about the ensuring accountability of the executive. And you're talking about the good governance, not even governance. Okay. When a new word comes, either it should have been there in the question, else you will first start defining the good governance. What do you understand by the good governance? That is not being asked in the question. So whenever you come up with the jargon, whether it's interview, whether it's meals, new jargon ensures explanation. तो ऐसे मत लाओ सर मतलब सर अकाउंटेबिलिटी का इम्पोर्टेंस सर मतलब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन सर वो भी एक नया टर्म आ रहा है सर मतलब ताकि कारण Sir, we can add a recent happening. For example, the no confidence motion recently in Lok Sabha. No. ब्रजेश सर अकाउंटेबिलिटी में हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाता है सर उसके थ्रू। ये जरूरी क्यों है ये आंसर करना है, तुम तो यार कंक्लूजन बताने लग जाते हो बॉडी। यस अब्दुल सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनी वेस्टमिंस्टर मॉडल। बिंगो, खत्म, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसके बाद। We are a democratic country. Accountability is one of the features over there. How you can say yourself democratic if you are not mentioning the same? Good enough. ठीक है, तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन में एक किक है, ठीक है। I will discover for you. Executive. I'm talking about the body as in the question. See, UPSC previous year questions लेने का यही फायदा होता है। When I say ना कि तुम लोगों को पढ़ना है, अब्दुल प्लीज म्यूट कर दिया कर यार, तू मतलब मन मन में बोलता रहता है फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। कोई नहीं, ठीक है। यार जैसे ऊपर हमने डिजायरेबिलिटी से देखा कि मेरे दिमाग में कुछ बत्ती जली मेंटोस जिंदगी वाली, ठीक है। अब अपने को एग्जीक्यूटिव दिख रहा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव? किसी को कुछ याद आ रहा है? मेघा political executive and मेघा Yes. मेघा बोला था मैंने, ये बोला हाँ, yes sir, yes sir. ठीक जब पूछता हूँ यू आर स्टिल आई थिंक अनस्पोकन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ मेघा बताओ, एग्जीक्यूटिव से क्या क्या आता है दिमाग में? Executive sir. So नहीं one यार, those चलो who are रुको, गिरजा यू वर ऑन राइट ट्रैक, स्पीक। यार हैंड रेस कर दिया करो ताकि मैं मुझे क्लियर रहे। yes, one is the political executive and other one is the officers that I'm not able to recall the exact technical word. No worries. One is political executive, that is temporary executive. Another is permanent executive, that is bureaucracy. Your ministers are also executive, yes, your secretaries are also executives. ठीक है, तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो आप लोग हैं ब्यूरोक्रेसी वाले, ठीक है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो मैं हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है ना, क्लियर? अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन एक हिडन क्वेश्चन है। आई एम डेसिफरिंग इट फॉर यू व्हेन इट सेज पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। So executive, every one of you, I think Abdul was the person who directly mentioned Article 72 as well. ठीक है, हालांकि इसने गलती से मेंशन किया माइक ओपन करके, दैट इज नॉट राइट थिंग टू डू, बट स्टिल ही वाज करेक्ट ओवर देयर, ठीक है। तो समहाउ क्या करना था हम लोग को वहां पे, वो वाला पार्ट पूरा हम लोग एड्रेस करेंगे। हर कोई मींस में भी एड्रेस करेगा, यू गाइस विल एड्रेस, बट वेदर यू आर एबल टू गो अप टू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और नॉट। अब हाउ टू uphold the accountability of permanent executive? Two things: code of conduct and all, departmental and all. Apart from that, if you remember, whenever a question is being asked in the question hour, ministers prepares the response for its officers. That way somehow minister takes the accountability of its officer as well, na?
उस IAS ऑफिसर से सेक्रेटरी को पार्लियामेंट में नहीं बुला लिया जाता, हालांकि साइन तो उसने भी किए हैं. इट इज द पॉलिटिकल मास्टर, दैट इज मिनिस्टर हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर ये वाला एनालिसिस 2 लाइन में आपके आंसर में आ गया और बाकियों के में मिसिंग है, तो it is 110% sure if everyone is scoring 6, you are going to score 8 marks in the 10 marker. Okay, मेघा और ब्रिजेश, डाउट है तो बताओ. सर आर्टिकल 72 तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है क्या था सर? पार्डनिंग पावर है? यस सर, आर्टिकल 72. यार मुझे आर्टिकल अभी याद नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ. यस सर, पार्डनिंग पावर. हाँ तो पार्डनिंग पावर फिर नहीं होगा, 74 आएगा. 74 होगा. यस सर. ठीक. यस मेघा. So could you please pardon the point that you said just now? Which one? So this one only, कि आपने अगर ये दोनों mention कर दिया तो you will score much better. Yeah, like people will write only about the political executive and their accountability. But what about the permanent executive? What about the bureaucracy? How to uphold them accountable? If you are able to analyze the situation in 2 lines or 3 lines with the code of conduct and how they are being shielded by the ministers, or how ministers are responsible for their actions, that is how our democratic setup is there, checks and balances theory is there. If you are able to mention these 2 points, you will score better marks than others. Okay, fine. Okay, Kriti. सर इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी जो डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन होता है उसके रिव्यू को करने से भी तो हम एड्रेस कर सकते हैं. See, once legislation is passed, again it is passed from the parliament only. It's not like that it goes beyond the parliament. It's like वो रूपरेखा ही तो तैयार करते हैं. They just give what say political executives the skeleton and they provide all the detailing and all. That's what the bureaucrats do. ठीक है, वहां पे भी अब कंसल्टेंट्स कर रहे हैं खैर आजकल. ठीक, तो this is again like रिव्यू करना. It might be some departmental work. Accountability means whatever actions you are taking, you are responsible for the same. ठीक है, डिपार्टमेंटल ACR होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. ठीक है, उसके बाद फीडबैक्स होते हैं, तो वो सब भी आप मेंशन कर सकते हैं. व्हेन आई सेड कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज मेंशन्ड ओवर देयर. ओके, तो उसको मैं ज्यादा डीप नहीं लेके गया, वरना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास हो जाता फिर ये. ओके ओके, ठीक है. ओके, so hopefully last question of the day. Any person who haven't spoken so far? No, I guess सबसे बुलवा ही लिया मैंने कुछ. नहीं, मुझे कोई चैट बॉक्स में दिख भी नहीं रहा है साहब. Fine. So pressure groups. Why am I reading it? So who will go? Any fastest finger first? Karan. So pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the business associations contribute to public policies. So sir, इसमें keywords pressure groups, influencing public policy making, directive keyword, business associations and public policies. मतलब तो redundant हो गया, ऊपर आ गया तो. Okay. Introduction, please. Megha. We can give the definition of pressure groups. Okay, fine. Anyone else? Abhishek. सर कोई रिसेंट हैपनिंग जहाँ पे ऐसा हुआ हो, जहाँ पे वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया हो. यार ये तो मैंने भी बताया है ना.
कम से कम या तो एग्जांपल तो 2-3 साल से पढ़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि क्या ये तो मैंने भी बोला ना रीसेंट हैपनिंग्स। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन में इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ और सब लोग तुम बारी बारी में से बोल दो कि सर रीसेंट हैपनिंग। अबे एक तो बताओ, फार्म लॉस वाला सर, फार्म लॉस वाला सर, बताओ तो सही कैसे, क्या मतलब मैं पूछ रहा हूँ इंट्रोडक्शन लिखोगे कैसे? अब्दुल ने पूरा इंट्रोडक्शन सुनाया था ना मुझे जब वो लिखा, हिंट नहीं देना है। तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है प्रेशर ग्रुप्स के अभी। कोई नहीं, फाइन, लाइन ऑफ थॉट इज करेक्ट देन, इतना ही बोलूंगा। एनीवन एल्स? गोपाल सर इसमें पॉलिटिकल मतलब जो बिजनेस क्लास है सर उसके इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या है? और इंट्रोडक्शन में नहीं, वो बॉडी में जाएगा। और सर एक पॉइंट और कि कहाँ पे उनको बुलाया जाता है पब्लिक पॉलिसी, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है उनको, ये अगर इंट्रोडक्शन में मेंशन कैसे करोगे? इंट्रोडक्शन में कैसे करोगे? ये सब बॉडी का पार्ट है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है सर। सर मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि गवर्नमेंट जो मीटिंग्स करती है कि इन दिस मीटिंग्स दे कोऑपरेट विद द ये गवर्नमेंट तो एंड बॉडी ट्राई है टू ना, इन्फ्लुएंस। हाउ आंसर ही ऐसे करोगे आप, फिर बॉडी में क्या लिखोगे? अच्छा ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, बेस्ट इंट्रोडक्शन है। हाँ मुझे हाँ बताओ नहीं सर, बॉडी में। मैं मेरे को ये कंफ्यूजन था, मैं इसलिए मतलब क्लियर कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा, नहीं फिर ये सब बॉडी का पार्ट है, वरना हाउ ठीक आंसर नहीं होगा ना। ठीक है ठीक। यहाँ पे डेफिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा 2 तरीके या 1 तरीका और है, उसमें देखता हूँ अभी मैं। अब्दुल आप अनम्यूट मत कर, पूरी बात बोल दे बिना अनम्यूट करे। अच्छा वैसे सर पहले फिर से म्यूट। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप जो है वो एक इंडिविजुअल का वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जो अपनी डिमांड डेफिनेशन इज फाइन, इट हैज बीन मेंशन्ड। डेफिनेशन के अलावा कुछ फाइंड आउट करना है? हाँ सर, फिर दूसरा हमको सब इंट्रो देना पड़ेगा कि बिजनेस एसोसिएशन से हमको रिलेट करना पड़ेगा कि प्रेशर ग्रुप्स हाउ बिजनेस जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं और उनका आवाज गवर्नमेंट में बहुत मतलब ज्यादा होता है। तो उसमें कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप ऑफ गुजरात में जैसे पार्टिसिपेटरी बजटिंग होता है, फेमस है। फिर ये यू कह आर सकते गोइंग हैं। इनटू द बॉडी, यू आर गोइंग इनटू द बॉडी। मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस के ग्रुप का एग्जांपल दो। असोचैम, एग्जैक्टली। असोचैम, फिक्की, सीआईआई, एआईटीयूसी। Fine. Apart from this, anything else if you have to mention, because this is the apt introduction for this question. You define the pressure group, but in the example, just to relate it with your question, you better focus on the pressure groups that are in the business domain. Okay. Anything else? Megha and Divyanshi. First Megha. सर आई वांट टू आस्क कि जैसे कुछ थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर या सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, वो जैसे प्रेशर ग्रुप्स के बारे, उनके रोल के बारे में कुछ डिफाइन कर देते हैं, उनका स्टेटमेंट। तो इफ अगर वो हमको याद आता है तो वी कैन मेंशन इट इन इंट्रोडक्शन। गुड गुड। सेकंड वे आपने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना। थैंक यू। ओके दिव्यांशी। सर हम प्रेशर ग्रुप से स्टार्ट ना करके पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी मेकिंग से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब देश गिव को मी द इंट्रोडक्शन। वही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ सर कि मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी या क्यों मतलब जरूरत है पॉलिसी मेकिंग। This question is not about the public policy, rather than it's about the pressure groups affecting the public policy. You cannot avoid pressure groups in any case. Okay. So last thing will be, if you can bring, as Abhishek said, recent happening, for example, recent meetings with stakeholders that influence GST Council to put dash into textile or 6% and or 12% bracket. आपने एक न्यूज से अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने इनडायरेक्टली दिखा भी दिया हाउ प्रेशर दैट पर्टिकुलर मीटिंग ऑफ प्रेशर ग्रोस विद द गवर्नमेंट एक्टिंग एज, मतलब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। उससे पहले देख लेना कभी भी हमेशा बिजनेस ग्रुपिंग की मीटिंग हो रही होगी। फाइन। काव्या। Yes, sir, the point you have mentioned, but another example is that recently India's opting out of RCEP, which the ASSOCHAM has protesting against it. So it in itself signifies the influence of pressure groups. Yes.
Now, as Kavya mentioned, she wrote a very short and crisp introduction, I'll say, and good one as well. Okay, so whenever you are writing short, crisp and application-based introduction, as we have just a context-based introduction or exemplification-based introduction, you answered the first line as itself, how it play a vital role. You are influencing what foreign policy of India. Okay. Then business association contribute to the public policy. Whether they only change being protective. Now go for the phases as well. Positive examples, how the pressure groups helped India to open up and we became the economic kind of economy we are today. Had it not been the open economy, we would have been a, I will say, some Bimaru type of nation state. Okay, it has helped. So going to the body part. Okay, so this is it from my side. Okay, I guess people are able to understand the question in 2 sessions. I guess people are able to understand the question, no doubt over it. Now, introduction is somehow clear, I guess. One more session of introduction practice. Okay, then we will move towards the conclusion sessions. One session of newspaper so that you can understand newspaper and relate the same in answer writing. After that, we will start our answer writing. Am I clear? Fine. Okay, yes, Megha, any doubt? Yes, sir. So there are certain